Let's take a closer look at the South Asian nation boasting one of the fastest growing economies in the world. हिंदुस्तानी मीडिया ने यह तस्लीम कर लिया कि बांग्लादेश साउथ एशिया की एक बड़ी ताकत बन चुका है, उभरती हुई ताकत बन चुका है बांग्लादेश। ये हिंदुस्तानी मीडिया कबूल कर रहा है। तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। Bangladesh has had to confront several hurdles since its founding in 1971. From hunger and poverty to insufficient power supply and rising radicalism, Bangladesh has faced and continues to face many challenges. Dhaka, the mega city and country's capital, however, has experienced an exceptional period of economic growth in the last few years under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina. Let's take a closer look at the South Asian nation boasting one of the fastest growing economies in the world. "2022 finished with a bang in Dhaka, with the country's very first metro rail opening. Large numbers of commuters were seen lining up in front of the metro stations in Uttara and Agargaon, all eager to ride. With the newly inaugurated metro train service, the recently opened Padma Bridge, and the ongoing construction of a new airport terminal, Bangladesh is experiencing a period of growth and excitement. The nation is establishing and implementing the critical infrastructure needed to move into a new era of modernization. আর ফ্যামিলি সহ নিয়ে আসি আলহামদুলিল্লাহ ঘোরার জন্য খুব ভালো লাগতেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এই উদ্যোগ নেওয়ার জন্য। আমরা আলহামদুলিল্লাহ খুব উন্নয়নশীল দেশে পৌঁছেছি আলহামদুলিল্লাহ। এর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আবার আজকে সকালবেলা চলে এসেছি মেট্রো রেলে উঠতে, কারণ মেট্রো রেল হচ্ছে আমাদের জন্য একটা স্বপ্নের মতো। এত বড় স্বপ্নটাকে আসলে বাস্তব রূপে দেখতে খুবই ভালো লাগছে, এর জন্য ঘুরতে যাওয়ার জন্যই চলে এসেছি। Bangladesh is experiencing major economic advancement and is on track to graduate from the United Nations least developed countries list by 2026. Prime Minister Sheikh Hasina and her political party, the Awami League, have been in power since 2009. Under her leadership, the country has achieved many economic milestones and human development also continues to improve. However, Bangladesh still has many challenges she must face. The fight against radical Islamists still rages, for example, as they continue to pose a significant threat to the country's economic growth and modernization. 2022 proved to be a year of many achievements across various sectors for Bangladesh, as the country registered a whopping growth of 7.2% amid a global slowdown. It is also noteworthy that Bangladesh's march towards economic prosperity has always been aided by its all-weather friend, India. I really thanks to Prime Minister Modi to take this initiative, and that he contributed vaccine to not only Bangladesh, also some South Asian countries, and it's really very, very helpful. India's investments and bilateral trade have greatly benefited its neighbor. Both countries not only share physical borders, but many cultural similarities as well. As a result, significant progress has been made in recent years in enhancing the connectivity between New Delhi and Dhaka. The relationship between India and Bangladesh not only benefits the two countries, but also plays a crucial role for the political and economic stability of the region.
New Delhi and Dhaka have already stated that they would step up cooperation to counter terrorism, violent extremism, and radicalization in the subcontinent. Delhi's commitment to support Dhaka is critical for a peaceful and stable South Asia. The scenes in Karachi are devastating, with many queuing for hours for a bag of subsidized wheat flour. With the price of a 10 kg bag of flour reaching 1,600 Pakistani rupees, approximately 7 USD, a great many of Pakistani citizens can no longer afford to buy basic food necessities from shops. Recently, the Pakistani Prime Minister, Shehbaz Sharif, too acknowledged the dire situation his country had gotten itself into, and said that it was a matter of shame that a nuclear power had to resort to begging. तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हो गए आटे के लिए ख्वार हो रहे हैं और ये तकरीबन कल का भी यही मामला पूरा दिन मैं रक्षे वाला हूँ अब मजबूर हो गया अभी 3 महीने गांव में गुजार के आया हूँ ये आया हूँ तो ये आफत आया हुआ है पता नहीं शहबाज शरीफ की वजह से और क़यामत आ रहा है आगे क्या होगा. Pakistan's citizens continue to suffer due to the multitude of crises the Islamic nation has been facing. Political volatility, rising food inflation, a worsening economic crisis, and devastating flooding have all combined to put Pakistan on the verge of collapse. According to the State Bank of Pakistan, the country's foreign exchange reserves have fallen to 4.3 billion USD, the lowest level since February of 2014. Containers of food items, medicines, and other goods remain stuck at ports across the country due to the rapidly depleting foreign exchange, leading to a shortage of essential goods. यार गवर्नमेंट से मैं यही कह सकता हूँ कि जो ऐसी चीज़ें हैं जो गाड़ियाँ बड़े लोग जो अमीर लोग लेते हैं उनके रेट बढ़ाओ आटे पे क्या रेट बढ़ा रहे हो यार आटे आप कर्जा लेके कहीं से भी आटा ले आओ दूसरी चीज़ों पे आप टैक्स लगाओ कुछ भी करो जो बड़े लोग हैं वो कर सकते हैं अभी आटे पे बढ़ा रहे हो अमीरों को तो उनको तो परेशानी तो हमें ही हो रही है ना तो आप आटा सस्ता करो बाकी चीज़ें बाहर में जाएं जो करनी है वो करो. According to the World Bank, Pakistan's economy is expected to grow by only 2% in the current fiscal year. It is expected that poverty in the poorest regions of Pakistan will worsen. Further, the national poverty rate may increase by 2.5 to 4 percentage points, pushing between 5.8 and 9 million people into poverty. The struggle for Pakistanis seems infinite, as macroeconomic risks in the country remain high and uncompromising. A large current account deficit, high public debt, and a lower demand from its traditional export markets. तो जी व्यूवर ये थी वीडियो और आपने देखा कि किस तरह हिंदुस्तानी मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि बांग्लादेश साउथ एशिया के अंदर एक उभरती हुई कुव्वत बन चुका है, साउथ एशिया का टाइगर बन चुका है. बांग्लादेश का मुआवजा किया जाए तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हर शोबे में पीछे छोड़ दिया है. कई शोबों में तो हिंदुस्तान को भी पीछे छोड़ दिया बांग्लादेश ने. और अगर बांग्लादेश की रैंकिंग की बात करें, तरक्की की बात करें तो बांग्लादेश की परसेंटेज को देखा जाए तो वो दुनिया में सबसे ज्यादा है. बांग्लादेश ने 2023 और 2024 में चीन से ज्यादा एक्सपोर्ट की है गारमेंट के अंदर. तो ये बांग्लादेश की साउथ एशिया का टाइगर होने के लिए वो कोशिशें हैं जो रंग ला रही हैं. और बांग्लादेश ने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान को भी कई शोबों में पीछे छोड़ दिया और साउथ एशिया की एक नई उभरती हुई कुव्वत बांग्लादेश बन चुका है. इस बात का इतराफ हिंदुस्तानी मीडिया कर रहा है. तो ये थी आज की वीडियो. आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा. बहुत शुक्रिया.